English. Guys, development of polio vaccine. ଆମର ଯେଉଁ ଅଲ୍ ପ୍ରୋବେବଲ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେସନ୍ ଚାଲିଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜ୍ ଦେଖିବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବିଙ୍ଗ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ examination still we must know nobody can tell what can come so we are to look at each and every questions of invitation to English 1 and by the way बहुत पिलांकर क्वेरी थिला कि सर अपन डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन रो क्वेश्चन आंसर पार्ट टिके डिस्कशन करंतु तो तुम मान को अनुरोध क्रमे पिले मु नै आसी आज डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन रो ऑल प्रोबेबल पैसेज प्रत्येक प्रश्न कोनोसी गोटे प्रश्न छाड़िबा नाही ऑल प्रोबेबल पैसेज और ऑल प्रोबेबल क्वेश्चन आल्सो आलोचना करबा ए सेशन रे ए वीडियो रे तो पिले जीवा सीधा प्रथम प्रश्न लेट्स वेट फॉर नोबडी का वेट करबा नाही किए पढ़ो किए न पढ़ो से अलग कथा अच्छी प्रथम प्रश्न हूँ व्हाई डिड अर्ली अटेम्प्ट्स एट पोलियो वैक्सीन फेल व्हाई डिड अर्ली अटेम्प्ट्स एट पोलियो वैक्सीन फेल प्रथमे अर्ली अटेम्प्ट्स पोलियो वैक्सीन तैयारी करिवार अर्ली अटेम्प्ट्स गुड़िक फेल है कहीं व्हाई इट इज फेल्ड जो दुई जन देखुच तुमको मान को अनुरोध करी कि नोटिफिकेशन जाइनी तो फ्रेंड मान सहित शेयर कर दो So early attempts of developing polio vaccine failed as a result what of the researcher total lack of knowledge about the virus. The reason was very clear that they have no knowledge about the virus. कारण researcher जो माने भी research करुथिले ता ऊपर से मान को जणा नथिला कोन जणा नथिला जे वायरस विषय से वायरस टा केतरा वायरस कोन होउची से विषय जणा नथिला सेदी पई अर्ली अटेम्प्ट्स फेल होइतिला दुई नंबर प्रश्न होची व्हाट डू वी नाउ नो वर्तमान में कौन जानिछे पोलियो वैक्सीन बाबद रे हम कौन जानिछे वर्तमान में कौन जानिछे वी नाउ नो दैट पोलियो इज कॉज्ड बाय थ्री स्ट्रेन्स ऑफ क्वाइट स्टेबल वायरस माने तीनटा वायरस रो सम्मिश्रण रे पोलियोटा कॉज होउछ बोली के हमें वर्तमान जानुछे that constitute a part of the enterovirus family having RNA as their genetic material, right? And the genetic material is RNA, isn't it? So this was the thing that we know now exactly. And third question is how can a polio vaccine be effective? How can a polio vaccine be effective exactly? This is the third question. So third question, polio vaccine केमती effective हेई पारिबो कोन केमती को ग्राउंड रे हेई पारिबो से जिनसटा अछि सो थर्ड क्वेश्चन रे पोलियो वैक्सीन केते बेले इफेक्टिव होबो पिले जेते बेले से तीनटा वायरस को इफेक्ट कला बलिया प्रभाव पकेला बलिया गोटे जिनसो हमें पाइबा सेते बेले सेटा इफेक्टिव होबो. So the answer will be a polio vaccine can be effective as a result of a vaccine power to control or confer immunity against all three strains of completely stable viruses. तीनटा वायरस को इनएक्टिव कला वाला कैपेसिटी जो पोलियो वैक्सीन रथिबो जो वैक्सीन रो तीनटा वायरस को कंट्रोल कला वाला कैपेसिटी थिबो से वैक्सीन ही ए वायरस को कंट्रोल करी पारिबो. क्वेश्चन नंबर 4 अछि बिले क्वेश्चन नंबर 4 होज व्हाट मेड इट पॉसिबल फॉर इन्फेंट्स टू एक्वायर इम्यूनिटी फ्रॉम पोलियो व्हाट मेड इट पॉसिबल फॉर इन्फेंट्स टू एक्वायर इम्यूनिटी फ्रॉम पोलियो छुआ माने केमती इम्यूनिटी एक्वायर करूथिले आगुरु छुआ मान को काहे की हो नथिला सो द आंसर कोन हबो इन्फेंट्स acquired immunity from polio because of their mother's antibodies because they were infants who were drinking milk from their mother and their mother's antibodies passed into them through breastfeeding. So माने क्षीर खाउथिले क्षीर खाउथिबा छुआ मान को हो नथिला कारण तांको मां मानकर एंटीबॉडी से मान को जाउथिला से मान को पास होतला. So last question अछि बिले question number 5 is exactly did improved sanitation help to avoid polio attack before the 1990s? Give a recent answer. What is it exactly?
Did improved sanitation help to avoid polio attack before the 1990s? 1990 ପୂର୍ବରୁ जो sanitation condition improve ହେଲା, is it helpful? एटा हेल्प कला कि गिव ए रीजन आंसर यार गोटे सठिक आंसर दियो ताहले कोन हला पिले यार आंसर केमति लिखिबा इट वाज एन आयरनी दैट इम्यूनिटी वाज प्राइमरीली एक्वायर्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी बिफोर 1990 टिके आगुरु जो प्रश्नर उत्तर हम लिखुतले जे 1990 मसिया पूर्वरु छुआ माने इम्यूनिटी केमति एक्वायर्ड करथले ब्रेस्ट फीडिंग थ्रू रे मदर्स एंटीबॉडी पास होतला से मानकु व्हाट as sanitation condition were poor and efforts at sewage and water treatment were primary before 1990s 1990 किंतु जते बेले sanitation condition improve हला छुआ माने एक्सपोज हले नै जो एदरे सेमान का देहरे एंटीबॉडी थिला जो से एदरे आ से माने एक्सपोज हेले नै जहा फल रे लेटर एदरे जते बेले से माने एक्सपोज हेई चंती दे वेर कंट्रैक्टेड विथ पोलियो से माने पोलियो माने संस्पर्श रे आसिले पोलियो संक्रमित हेई चंते जीवा नेक्स्ट पैसेज पिले ये थिला प्रथम पैसेज द्वितीय पैसेज रे कोन अछि व्हाट इंड्यूसेस हायर लेवल ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन व्हाट इंड्यूसेस हायर लेवल ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन कहा द्वारा है हायर लेवल ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन होउची सो एठी कोन होची पिले कोन कले हायर हायर एंटीबॉडी हबो आम देहरे आउ कि को वैक्सीन आम केमती वैक्सीन तैयारी कले आम देहरे इम्यूनिटी बहुत बढ़िबो तो एटा होची प्रश्न ए जगह डेवलपमेंट ऑफ मोर प्रोडक्टिव कल्चरिंग एंड प्यूरिफिकेशन जेते कल्चर एवं प्यूरिफाई अब वैक्सीन ता तार एंटीबॉडी सेतिकी बढ़िबो क्वेश्चन नंबर 2 कोन पिले बोथ वैक्सीन्स आर करेंटली इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड व्हाट डू बोथ वैक्सीन रेफर्स टू नहीं एठी जो दुईटा वैक्सीन विषय रे कहा जाय छी टू वैक्सीन्स अबाउट टू वैक्सीन बोथ वैक्सीन्स आर करेंटली इन यूज नहीं थ्रू आउट द वर्ल्ड पृथ्वी सारा तो एठी व्हाट डू बोथ वैक्सीन रेफर्स टू ए जो बोथ वैक्सीन कहा जाय छी ए को दुईटा वैक्सीन विषय कहा जाय छी हम सब जानि थिबा दुईटा वैक्सीन होची गोटे होची सैक वैक्सीन आ गोटे होची सेवन वैक्सीन सेवन टा होची ओरल फॉर्म आ सैक टा होची इंजेक्शन फॉर्म so these both refers to sac vaccine and seven vaccine clear question number 3 pile question number 3 kono what is the result of continuing research for improvement of vaccine माने निरंतर भाव रे ए जो वैक्सीन ऊपर गवेषणा हला तार फल कोन हला what is the research or what is the research yes that what is the result of continuing research for improvement of vaccine result कोन थिला तो क्वेश्चन नंबर 3 थिला पिले 3 रे कोन हबो रिसर्चर्स टेंड टू शो मोर इंप्रूवमेंट इन वैक्सीन से माने कोन करथिले जेति की रिसर्च करी जाउथिले वैक्सीन रो इंप्रूवमेंट सेति हे जाउथिला यस और नो एंड इफेक्टिव कल्चरिंग एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स आर डेवलप्ड कल्चर एवं प्यूरिफिकेशन टेक्निक डेवलप होउतला आउ कोन होतला इन वैक्सीन टू इंड्यूस हायर लेवल्स ऑफ एंटीबॉडी हायर लेवल्स ऑफ एंटीबॉडी तैयार करबा पई कल्चर चालिथिला एवं प्यूरिफिकेशन भी चाली रहता क्वेश्चन नंबर 4 what is the research that prompts the scientists to try genetic alteration of the polio virus what is the research से research टा कोन जोटा होची that prompt the scientists जहा साइंटिस्ट मन को prompt करिथिला कोन करबा पई to try genetic alteration of the polio virus genetic alteration करबा पई तार जो जीन रूपांतरण प्रक्रिया करी कि नवा जो वायरस सृष्टि करबा पई वैक्सीन सृष्टि करबा पई थिला सेटा कोन थिला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न उत्तर इट इज द रिसर्च एरिया ऑफ रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी व्हाट मन रखिया पिले रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी एग्जैक्टली दैट प्रॉम्प्ट द साइंटिस्ट टू ट्राई जेनेटिक अल्टरेशन ऑफ द पोलियो वायरस and by this recombinant biotechnology what that prompt them to try genetic alteration of the polio virus क्वेश्चन नंबर शेष प्रश्न द्वितीय पेपर शेष प्रश्न कौन अच्छी बिले व्हाट आर द रिसर्चर मेकिंग यूज ऑफ एज ए होस्ट फॉर बैक्टीरियल जीन क्लोनिंग व्हाट आर द रिसर्चर मेकिंग यूज ऑफ एज ए होस्ट फॉर बैक्टीरियल जीन क्लोनिंग जो करा होतला बैक्टीरियल जीन क्लोनिंग पाई काहाकू से माने होस्ट हिसाब रे नौथिले को वायरस टाकू को बैक्टीरिया टाकू से माने होस्ट हिसाब रे नौथिले सो द रिसर्चर आर मेकिंग यूज ऑफ एस्चेरिचिया कोली
yes or no मन रखिबा ए जिंसटा एस्चेरिचिया कोली as a host of bacterial gene cloning. Getting me? Escherichia coli was being taken by the researcher for what? Gene cloning. এটা ଥିଲା 2 नंबर पैसेज पिले पैसेज नंबर 3 को जिबा पैसेज नंबर 3 कोन why was polio a frightening contagious disease polio टाकू गोटे फ्राइटनिंग माने डरावना भयभीत करुथुवा फ्राइटनिंग कंटाजियस डिजीज बोली के काहे की कुहा जाईची व्हाई इट इज कॉल्ड तो आंसर कौन हम पिले किए कहब पोलियो वाज फ्राइटनिंग कंटाजियस डिजीज बिकॉज एमती तो अधा अधा क्वेश्चन अधा उत्तर लिखा सो पोलियो वाज अ फ्राइटनिंग कंटाजियस डिजीज बिकॉज इट अफेक्टेड ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ पुअर एंड रिच धनी गरीब समस्ते यह द्वारा आक्रांत होते and assumed a devastating proportions and it seemed impossible to hold it yaku to check the polio at the time it was seeming impossible माने असंभव माने होतिला जे याकू चेक करा जाई पारिबो नाही यह द्वारा धनी गरीब पैसा थिला लोक पैसा नथिला लोक समस्ते infected होतले पिले क्वेश्चन नंबर 2 what did the first half of 19th century witness नहीं फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century witness प्रथम 1900 मसीहार प्रथमार्धरे कौन होतला फर्स्ट हाफ रे कौन होतला पिले क्वेश्चन नंबर केते 2 so the first half of the 19th century witnessed a great advancement in basic hygiene methods and knowledge लोक मानक भितरे हाइजीन मेथड आउ नॉलेज ज्ञान बढ़ी जाइथिला आउ कौन होता पिले पीपल एक्सपेक्टेड साउंड हेल्थ इंस्टेड ऑफ मेयरली होपिंग फॉर इट लोक आग जमती हाँ छाड़ी जीव हेइति तो छाड़ी जीव एई जिनसटा लोक मनरु हटि जाइथिला ता लोक मेडिसिन रो व्यवहार विषय जानिथिले लोक माने कोनोसी जिंस हले तार अगेंस्ट स्टेप नउथिले केमते क्योर हेबे से जिंस ऊपर फोकस करूथिले क्वेश्चन नंबर 3 बिले what were the terrifying outbreaks that seemed impossible to stop what were the terrifying outbreaks that seemed impossible to stop को जिंस माने बहुत व्यापी जाउथुला और जोटा लागुथुला कि एटा बंद करा जाई परिबो नाही क्वेश्चन नंबर 3 पिले सो इन कंपैरिजन टू फ्लैग और इन्फ्लुएंजा हमें जदि फ्लैग किंबा प्लेग किंबा इन्फ्लुएंजा सहित कंपेयर करिवा व्हाट हैपेंस पोलियो वाज अ फ्राइटनिंग एंड हाईली कंटाजियस डिजीज प्लेग और इन्फ्लुएंजा तुलन रे पोलियोटा कौन थिला इट वाज टेरिफाइंग एंड हाईली कंटाजियस डिजीज and attacking both the poor and rich it rose in terrifying outbreaks that seem impossible to check जोटा लागू थला जे एटा चेक करा जाई पारिबो नाही क्वेश्चन नंबर 4 कौन थिला व्हाट हैपेंड इन अर्ली 1950s 1950 मसिया अर्ली 1950 बेल को कौन होउथिला पिले क्वेश्चन नंबर 4 So in the early 1950s, कौन होता पिले? There were shocking poster of children. There were shocking poster of children, on crutches and iron lungs. पिला माने crutch आशा बड़ी रे थिले. Iron lungs that cumbersome mechanical aids, heavy mechanical aids जा से माने कर फुसफुस को पैरालाइज हो जाउथला. ताकू यूज करा कृत्रिम फुसफुस बोली हम जाको कहउचे पिले. So exactly mechanical aids to help those whose lungs would not function at all. जो मानकर lungs function करनो थिला से माने से some mechanical aids बोली जा को जे iron lungs से iron lungs से survive करथले से पिला माने क्वेश्चन नंबर 5 पिले what light does the extract through on Roosevelt के विषय रे आमे ए एक्सट्रैक्ट रे कोन पढु छे पिले कोन जानू छे exactly and so exactly Roosevelt had a spectacular political career am समस्त जानी थी he had become twice the president of America so in the early 1950s Roosevelt had a spectacular political career he became the president of the United States of America above all he was a relentless crusader against polio and he was the person who actually spearhead the research against polio getting me से माने पोलियो रो गवेषणा को बहुत कौन करथिले आर्थिक प्रोत्साहन जोगैथिले जहांक पाई माने गोटे प्रकार कहबा को गले जो हमरो फाउंडेशन टा भी तयारी हेतिला
जहाँ जो से पोलियो एगेन्स्ट रे कौन करुले रिसर्च करुले माने साइंटिस्ट मान को हायर करी तापर जी पिले 4 नंबर पैसेज कौन अच्छी व्हेन डिड आउटब्रेक्स ऑफ पोलियोमाइलिटिस प्लेग अमेरिका अमेरिका रे केबे कौन होता पिले व्हेन डिड आउटब्रेक्स ऑफ पोलियोमाइलिटिस प्लेग अमेरिका अमेरिका केबे पोलियो द्वारा ग्रस्त होता पोलियो होता इन द ईयर 1921 यस और नो in the year 1921 outbreaks of poliomyelitis plagued America simple बहिरे अच्छी सीधा सीधा लिखि परिबा में क्वेश्चन नंबर 2 when did Roosevelt find out that he was a victim of polio रूजवेल्ट केते बेले जानिले जे से पोलियो ग्रस्त होइछंती when so as you know when a tiring day Roosevelt took a long swim for relief and lay leisurely in a swimsuit at home fighting a local fair at their Cambodia estate when he was vacationing with his family. What happens? And taking a cold swim to get relief. Just resting there and started sneezing. And after diagnosis, came to know that he had contracted polio. They thank polio. Hey, question number 3. Enumerate the early symptom of polio attack. Enumerate the early symptom of polio attack. Polio हेले प्रथमे लोक मान को कौन होता कौन व्हाट आर द सिम्पटम ऑफ पोलियो एट द बिगिनिंग तार कौन होता है द अर्ली सिम्पटम्स ऑफ पोलियो अटैक वेर फ्लू लाइक वंस सच एज हेडेक नसिया वोमिटिंग एंड फीवर हैं कौन कौन होता यस नसिया हेडेक नसिया वोमिटिंग एंड फीवर दीज आर द फ्लू लाइक सिम्पटम्स दीज आर द अर्ली सिम्पटम्स ऑफ पोलियो क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच थिंग्स आर द कैरियर्स ऑफ पोलियो वायरस पोलियो वायरस वायरस रो कैरियर सब कौन कौन थिला पिले कैरियर्स कहले जहा द्वारा पोलियो आम देह को आसुथिला सो पोलियो वायरस कैन स्प्रेड थ्रू फिजिकल कंटैक्ट प्रथम जिनस होची फिजिकल कंटैक्ट एक विथ इन्फेक्टेड फेसेस जते बेले संक्रमित जिनस नहीं जते बेले संक्रमित जिनस को आम छुईबा जेमति कोरोना वायरस होतला मझरे सो पोलियो वायरस कैन स्प्रेड थ्रू फिजिकल कंटैक्ट विथ इन्फेक्टेड फेसेस और थ्रू इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स traveling through air in food and in water है प्रथम होची इन्फेक्टेड फेस देन होची एयर देन हला फूड देन हला वाटर एतेटा जिंस जो जदी इन्फेक्शन अछि ताहले हमकु हेई पारे क्वेश्चन नंबर 4 पिले 5 व्हाट परसेंटेज ऑफ पोलियो अटैक्ड बाय पीपल virus actually suffer from severe polio what percentage of people attacked by polio virus actually suffers from severe polio केते परसेंट लोक severe polio रो शिकार होउथिले exactly what is the data 1% of people attacked by polio virus actually suffers from severe polio 1% मन रखिबा this is the keyword शेष पैसेज को दिबा शेष पैसेज देखिबा शेष पैसेज रे अछि हमरो जो in 1957 in an effort to improve upon the killed sac vaccine एठू माने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज with regard to relative safety and cost ए पर्यंत हैला जेते बेला दुईटा जगह वैक्सीन बाहरी छी तापर तार जो एडवांटेज डिसएडवांटेज अछि तार डोज अछि ताकू नै कि ए पैसेजटा अछि तो क्वेश्चन नंबर 1 पिले क्वेश्चन नंबर 1 होछि व्हाई डज द राइटर गो बैक to 1957 व्हाई डज द राइटर गो बैक टू 1957 1957 मसियार कथा काहे कि एठी राइटर कहिसंती व्हाई इट इज टोल्ड द राइटर गोज बैक टू 1957 बिकॉज इन ए वीट टू इंप्रूव अपॉन द किल्ड सैक वैक्सीन कारण किल्ड सैक वैक्सीन जो सैक वैक्सीन द्वारा लोक मरुतिले जेतबले ऑल ऑफ ए सडन कैनेडा रे याकू टेस्ट करिवा पई परमिशन दे दिया गला यूज भी हला किछि लोक मले 200 समथिंग लोक मले सेही समय रे कोन जिबले बिकॉज इन ए वीट टू इंप्रूव अपॉन द किल्ड सैक वैक्सीन अल्बर्ट ब्रूस सेविन started experiment से किल्ड सैक वैक्सीन को इम्प्रोवाइज करिवा पई अल्बर्ट ब्रूस सेविन कोन कले आउ थरे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कले एंड ए लाइव ओरल फॉर्मा वैक्सीन इन व्हिच द इन्फेक्शन पार्ट वाज रेंडर्ड इनएक्टिव जोटी कोन हला इन्फेक्शन पार्ट टाको रेंडर करी किरी ताको परिवर्तन करी किरी नवा वैक्सीन गोटे ओरल फॉर्म रे डेवलप करा गला क्वेश्चन नंबर 2 हाउ वाज सैक वैक्सीन गिवन सैक वैक्सीन केमते दिया हुए और डोज ऑफ सैक वैक्सीन जाको कहबा हाउ वाज सैक वैक्सीन गिवन So sac vaccine was injected into the muscle exactly into medical doses. दुईटा डोज रे दिया जाउथला and each at an interval of 1 month. केते
इज एट ए एट एन इंटरवल ऑफ 1 मंथ गोटे मासे छड़ा मासे दुईटा दिया जाउतला एंड नीड बूस्टर आफ्टर एवरी 5 ईयर प्रत्येक 5 वर्ष पर आ गोटे बूस्टर डोज दिया जाउतला इंट्रामस्कुलर दिया जाउतला प्रथम माने 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ दुईटा डोज दिया जाउतला प्रत्येक 5 वर्ष पर आ गोटे बूस्टर डोज दिया जाउतला। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ इज सेविन वैक्सीन गिवेन सेविन वैक्सीन केमती ओरल वैक्सीन टा केमती दिया जाउतला सेविन ओरल वैक्सीन टा केमती दिया जाउतला सो सेविन वैक्सीन इज गिवेन इन 3 डोजेस केमती 3टा डोज रे दिया जाउतला 3 डोजेस इन द फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ माने 3 डोज कहले फर्स्ट 2 इयर्स कहले 8 मंथ रो गैप रे दिया जाउतला 8 3 24 हम समझते जानि थिबा फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ एंड बूस्टर इज एडमिनिस्टर्ड व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट स्कूल व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट स्कूल पिलाटी जब विद्यालय को जाउतला पढिया पई सेतबेले ताको बूस्टर भी दिया जाउतला बूस्टर डोज गोटे दिया जाउतला पिले तापर अछि पिले क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न रे कोन अछि एक्जेक्टली यू नो थ्रो लाइट ऑन द एडवांटेज ऑफ एन ओरल वैक्सीन थ्रो लाइट्स ऑन द एडवांटेज ऑफ एन ओरल वैक्सीन रो एडवांटेज सब कोन थिला लाभ सब कोन थिला सो द एडवांटेज ऑफ एन ओरल वैक्सीन प्रथम मु जदी ओडिया रे कहि दे पिले प्रथम एडवांटेज थिला एथरे इंजेक्शन लागु नथला माने गोटे गोटे सिरिंज जण जण को दबा अपेक्षा जण जण को बुंदा बुंदा देई दबाटा कॉस्ट कम होबो ना नै सो 7 वैक्सीन इज गिवन इन 3 advantage of oral 7 vaccine the advantage of an oral vaccine are long lasting immunity प्रथम जिंस होची long lasting immunity first thing second thing the prevention of the reinfection of digestive system prevention of reinfection digestive tract कारण पेट भितर को जाउतला से भितर इनक्यूबेट करूतला सेठी हैच करी कि वंश विस्तार करूतला पोलियोटा तो तेणु याकू जेतबेले पेट को जाउतला से पेट भितर इन्फेक्शन हो नतला रीइन्फेक्शन का हो नतला क्वेश्चन नंबर 5 शेष प्रश्न होची व्हाट इज द मेजर डिमेरिट्स ऑफ ओरल वैक्सीन द मेजर डिमेरिट्स कोन थिला व्हाट इज द मेजर डिमेरिट्स ऑफ ओरल वैक्सीन द मेजर डिमेरिट्स कोन थिला द मेजर डिमेरिट्स ऑफ ओरल वैक्सीन दैट इट इज इनएप्लीकेबल टू पेशेंट विथ वीक इम्यूनिटी जो मानकर दुर्बल रोग प्रतिरोधक शक्ति रहउतला से माननको एटा दिया जाई पारु नथिला कारण जो से माननको देई देले से माने निजे रोगग्रस्त हे जाउथिले सिंस इट इज अ लाइव वायरस दैट मे इफेक्ट द वाइटल बॉडी पार्ट्स ऑफ दिस पेशेंट कारण सेई लोक माननको सेई देला परे से माननको भी हवार संभावना बढ़ी जाऊ थिला। अच्छा आउ किछि प्रश्न आलोचना करबा कि बिले व्हाट डू यू थिंक आउ किछि प्रश्न आलोचना करबा जदी ताहले भी अछि औरी प्रश्न नहीं दैट्स ऑल स्टे ट्यून्ड मास्टर ऑफ इंग्लिश।